I'll start this session with two things, verse, not verse, but tradition, hadith of Holy Prophet, and a poem of Shah Abdul Latif Bhitai. अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धनी कादर पंहिंजी कुदरत से कायम आह कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सारा यहाँ सचो धनी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ियों जोड़ जान जी. हदीस मन अर्फ नफ्सहू फ़क़त अर्फ रब्बहू. If you know yourself, you can know your God. Sarwat Mohiuddin is probably one of few Pakistani writers who has done so much work on Sufism, especially the mystic poets of Punjab. Sarwat has written both in Urdu and Punjabi, prose and poetry. Her outstanding work is her own poetry, which is in 4 volumes, I believe. And also she has written, I think for the first time, Mahia in Urdu. उससे पहले किसी ने नहीं लिखे. जो पंजाबी माहिए होते हैं या टप्पे होते हैं. First woman to write a book. Okay. Mahiyas, Urdu Mahiyas. Mahiyas. She also has written a travelogue about Sweden. About Scandinavia. Scandinavia and Sweden. Sarwat's lectures and, she's a visiting lecturer in different places, nationally and internationally. And she also has keenly written something in collaboration with the Hungarian embassy, and that's about. I've translated Petofi. Petofi. Petofi is their national poet. Shandor Petofi. Shandor Petofi. I've translated him into Punjabi poetry. His poetry has been translated. And she was telling me that Allama Iqbal, I didn't know that. मैं खुद अपनी जहालत पे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था. Allama Iqbal in his Payam Mashriq, he has referred to Petofi and dedicated, yeah. And even Petofi was the one who died at the age of 26. 5 years के अंदर उसने पूरी Hungarian कौम को जो है वो मुतहरिक कर दिया था with his. So over to Sarwat. And Sarwat, at the end we will have a question and answer session for 20 minutes. Okay. We want everybody to have any type of question regarding Sufism, please. Okay. Thank you so much, Masood, Lohar Sahib. So I think since it's just an hour-long session, I think I'll just give my talk first and then we can have questions and answers. Now, Sufism is, or mysticism, is common to all religions of the world. Mysticism is found in every religion, but mysticism which is within the realm of Islam is known as Sufism. And, or Tasawwuf. Tasawwuf comes from the word Safa, which means purity. And Tasawwuf or Sufism is actually an attitude towards life. It's not a philosophy, but an experience. So it cannot be expressed in words. The best way or the closest way to explain Sufism is in poetry. That is why so many Sufi poets have written about Sufism in verse. Now, it's a spiritual way towards a divine life in which man loses consciousness of existence. And that is where you attain marifa, or the ultimate knowledge of reality. It is by following tariqat, which is the spiritual path. We have Sharia and we have tariqah. Sharia is the Islamic law and tariqat is the spiritual path. So, and it is by zikr. Zikr is the Sufi way of meditation. And it is through tariqat and zikr which leads to an altered state of consciousness, which
eventually leads to haqiqat, which is the ultimate truth. Now, before going deeper, I would like to tell you about the advent of Sufism into the subcontinent. Because Sufism came to the subcontinent with Ali Hajweri, who's better known as Data Ganj Bakhsh, and he is buried in Lahore. Data Ganj Bakhsh came with Mahmud of Ghaznavi's son to Lahore, and he stayed here. And it was in Lahore that Ali Hajweri wrote his very famous Persian work known as Kashful Mahjoob. Now, Kashful Mahjoob is the first written book about the laws of Sufism. It's the first ever known theoretical work on the history and rules of Sufism. And it is in Persian language, which of course has been translated into many languages now. But now Ali Hajweri's time was the late 10th and early 11th century. Although he converted hundreds and thousands of people to Islam, but the real influence of Sufism to the subcontinent came with Khwaja Mohiuddin Chishti of Ajmer, who came to the subcontinent in the 11th century. And by that time, by 11th century, these Sufi orders had been established. Data Ganj Bakhsh Ali Hajweri had mentioned about 12 Sufi schools in his book Kashful Mahjoob. But the most important Sufi orders are very famous 4 orders, which are Qadriya Silsila, which was started by Sheikh Abdul Qadir Jilani, and his time was 1078 to 1166. The second is the Chishtiya order, to which Khwaja Mohiuddin Chishti belonged, but to the subcontinent, the Chishtiya Silsila came earlier than the Qadriya Silsila. And when Sheikh Mohiuddin Chishti came to Delhi, and from there he went to Ajmer, it was in 1193. So it was the later part of the 12th century then that the Sufism came to the subcontinent. The third silsila is known as Sohrawardiya, which the founder of which is Sheikh Shahabuddin Sohrawardi, and his time was 1144 to 1234. And the fourth one is Naqshbandiya, of course. Sheikh Bahauddin Naqshband started this. Khwaja Mohiuddin Chishti, when he came to Ajmer, and then that silsila was here, the Qadriya silsila, which is the older silsila, came to the subcontinent much later in the 15th century. But the Chishtiya order, Khwaja Mohiuddin's disciple was Hazrat Bakhtiyar Kaki, and his disciple was Baba Farid. Baba Farid, I will try to focus my talk on the Sufi poets of the Punjab because that is my literary field. So it can be related to all others, but since my work is on that, so I will try to focus on that. And Baba Farid was born near Multan. There's a place called Kotiwal. And he was born there, and when he went to Delhi from Multan, he went to Delhi, and there he became the disciple of Hazrat Bakhtiyar Kaki. And Baba Farid's disciple was Hazrat Nizamuddin Aulia, and his disciple was Amir Khusro, who was instrumental in making the Qawwali as in the form which we hear today. Although Qawwali music is actually the Sufi way of meditation, as I've said, is called zikr. Zikr is the continuously chanting of a phrase or a word. But this is not something very special to Islam. This type of meditation is
in all religions you find this chanting of some phrase or some word, and that is the form of meditation. So this chanting is zikr, but listening is called sama. It has to do something with your samat, so you hear it. So sama was the form of zikr. I mean, zikr was performed, and people who listened to it, that's called sama. So this was an old tradition, Islamic way of meditation. When Hazrat Mohiuddin Chishti of Ajmer came to the subcontinent in the late 12th century, he realized that the way to reach to the masses just by preaching was not enough, because this subcontinent had this tradition, because of the Hindu religion being so old. It had the tradition of people using music and singing in the form of bhajans and temples. They used to sing in temples. So without music, this dissemination of Islam was not possible. So Mohiuddin Chishti encouraged in zikr and sama. That was the earliest form of qawwali, because otherwise it was not possible to reach out to the masses. So by the time Amir Khusro, as I've said, Mohiuddin Chishti, and then Bakhtiyar Kaki, Baba Farid, Nizamuddin Aulia, and then Amir Khusro. In his time, he gave this formal composition of qawwali. So this now I will like to tell you about something about how the Sufi, what are the different kinds of Sufis, or especially the Sufi poets. The earliest Sufis were ascetic Sufis. These are the Sufis who are reacting against, all Sufis are reacting against the opulence and tyranny of rulers, and but ascetic Sufis emphasize on faqr. Faqr is fakiri, but it is the denial of the worldly, Zuhd, well-to-do, basically, well-to-do asceticism. thing. Yeah. But and it's called, actually it's the enforced poverty. You enforce poverty on yourself, and you it is the non-attachment to worldly things. This is how ascetic Sufis, this was their main theme. And the other thing was tawakkul. Tawakkul is the absolute trust in God. So faqr and tawakkul were very the essential things for the ascetic Sufis, and these were the earlier Sufis. So Baba Farid is one of those Sufis. And Baba Farid, who's known as Gan Shakar also, his time is 1173 to 1265. And his poetry is in couplets. In 12th century, Baba Farid wrote in couplets. Kafi was not, Kafi, the form of Kafi was not there at that time. So his poetry is all in couplets, which are called dohe, or in his time, his poetry is known as shalok. Now shalok is just a 2-line poetry, but it contains the whole philosophy of life in it. And when Baba Farid says, Rukhi sukhi khai ke thanda pani pi, vekh par aayi chopdi na tarsami ji. Wow. Now this is what fakiri is, what faqr is. And then again, it's a misconcept that people think that Sufis or Sufism preaches you to leave the world and go into the jungles. वो तो बड़ी आसान बात है, दुनिया को छोड़ के जंगल में चले जाना तो बहुत आसान बात है. The main thing is to remain in the world and to fulfill all your duties, and yet be detached in a way that you are spiritually
you gain spiritually. So Baba Farid, he says, and then Sufi message is actually it's action oriented. It's not the living of the world, but it is action oriented. Sufis give this message of really living your life. And Baba Farid says, कूक फरीदा कूक तू जूं राखा जवार, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार. वाह वाह वाह. इट मीन्स एज दैट. अब इसका मैं आपको उर्दू में बता दूं, आपको शायद सिंधी में थोड़ा इट्स क्लोजर, बट इसका मतलब कूकता कौन है? कूकता है चौकीदार, जो रखवाला होता है. मसलन फसलों का जो रखवाला है, वो उसकी क्या जिम्मेदारी है कि उसने उसकी रखवाली करनी है, कि उसको फसल को पकने तक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल कि ये पूरी तरह पके और अच्छी तरह पके. सो दैट इज़ योर लाइफ. सो वन, you yourself are the chowkidar, or you have this responsibility of looking after your life until the very end. And that means that you have to be consciously aware of what are the things which are going to harm you and what are the things which are detrimental to you, So you have to be fully awake and fully aware of your life, and you have to look after it just as a चौकीदार looks after the फसल. जब लग टांडा ना गिरे, टांडा वो होता है जो कि फसल के ऊपर जब वो पकती है, मसलन के कोई भी फसल, जब उसका वो खोशा पक जाता है और वो पक के गिरता है, तो वो इंसान के लिए तो ज़िंदगी का पक के गिरना उसकी मौत है. तो आखिरी लम्हे तक you have to be vigilantly looking after your life. So that is the message. And then even that has been taken further, like Bulle Shah's time is the 18th century. And Bulle Shah on the same theme says, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ये सौन तेरे दरकार नहीं, कि अपनी ज़िंदगी को सो के नहीं गुजारना, और जागो, जाग के अपनी ज़िंदगी को गुजारो, और जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करो, और जो whatever you are supposed to do it full heartedly. जैसे कि शाह हुसैन ने कहा, तेरा चरखा रंगड़ा रंग लाल, कत्ता में चावा नाल. Now चरखा is the wheel of life, चरखा काटना, ज़िंदगी गुजारनी, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर कत्ता में चावा नाल, कि आपका जितने एक्ट्स हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसको आप पूरे दिल से करें. This is the Sufi message. If you allow me, I want to relate one from Baba Bulle Shah. Yes. जीत जीत के उम्र गुजारी, हुण तू हार फकीरा. जीतण दा मुल चार चवन्नी, हारण दा मुर हीरा. आख बुल्ला शाह जिन्ना हार न मन्नी, ओ बे मुर्शिदा बे पीरा. मीनिंग ये है कि सारी ज़िंदगी जीतने की ख्वाहिश में पूरी ज़िंदगी गुजार दी, अब हार जाओ. Voluntarily surrender yourself. And that surrender is not towards the world, the surrender is towards the God, towards God. That is where you really surrender. But the most, Masood, most significant idea of Sufism is ishq. Ishq is the basis of Sufism, क्योंकि सूफीज़ का ये मैसेज है कि अगर आप कुछ भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, तो अगर आप सिर्फ इबादत के लिए इबादत करते हैं, आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, आप सारे रिचुअल्स पूरे करते हैं, मगर अगर आप वो खुदा के इश्क में नहीं कर रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. अगर इश्क में आप एक नमाज भी पढ़ते हैं, बट दैट इज़ फॉर द लव ऑफ गॉड, so that is more important. So ishq is the Sufi's intense love for the creator. और इसीलिए और वो इश्क उस हद तक होना चाहिए कि जिसमें आप अपने आप को भूल जाएं, अपना ईगो ख़त्म कर दें. You lose yourself. Like Bulle Shah says, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा हुई. You lose your own self and you are immersed into ishq or love. And this
For the Sufi, death is like meeting the beloved, which is the God. It is the ultimate, because that is why you do all these good things, your good deeds. ये सारे आपका अमल है जो आपके साथ जाना, और इसी को सिंबल्स में शाह हुसैन ने तो ये जो चरखा और काटना और जहेज़ दाज और वो बनाना, वो सारी फ़िलासफ़ी यही है कि आपके अमल जो हैं वो आपका जहेज़ आप तैयार करें अगली दुनिया में जाने के लिए. एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, all these Sufi poets wrote their poetry as a woman. उन्होंने औरत बन के बात की है. रांझा रांझा कर दीनी में आप पे रांझा होना, बुल्ले शाह खुद हीर है और रांझा कौन है? अल्लाह. सो और ये सिंध में भी यही ट्रेडिशन है ने अपने आप को औरत के तौर पे, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है सूफीज़म का. ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप पर्शियन पोइट्री, क्लासिकल पोइट्री देखें तो उसमें हमेशा द बिलवड इज़ द वुमन. औरत के लिए शायरी की जाती है, मर्द शायरी करता है. मर्द आशिक है और औरत महबूब है, माशूक है. ठीक है. मगर सिंधी ट्रेडिशन में और पंजाब की ट्रेडिशन में और सूफ़ी ट्रेडिशन में जो है आशिक, वो औरत है. सो जितने सूफ़ी शायर ने जब भी बात की है, उन्होंने औरत की ज़ुबान में बात की है, इसलिए कि औरत की तरफ से द सूफ़ीज़ बिलीव्ड, एंड आई मीन दैट इज़ द ट्रूथ, कि औरत की कमिटमेंट हमेशा ज़्यादा होती है इश्क में, और वो ज़्यादा साबित कदम होती है. तो वो खुदा को अपना महबूब बनाते हैं. इसीलिए उनका जो अल्टीमेट है ना, वो होता है कि जब मौत है, सो मौत को वो मौत ख़त्म होना नहीं समझते. वो समझते हैं इट इज़ द यूनियन विद द बिलवड, एंड दैट यूनियन इज़ सेलिब्रेटेड जस्ट लाइक एनी अदर सेलिब्रेशन. सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट उसको ऐसे शादी की तरह किया जाता है. इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जब ये जितने हमारे दरगाहें हैं, शायर हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी जब डेथ एनिवर्सरी होती है तो उसको उर्स कहा जाता है. उर्स इज़ द वर्ड फॉर वेडिंग. अरूस इज़ द वर्ड फॉर वेडिंग. सो दैट इज़ देयर अल्टीमेट मीटिंग विद द बिलवड. इसीलिए उर्स को सेलिब्रेट किया जाता है. आप देखें कि जितनी दरगाहें हैं वहाँ पे कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो उनके पैदाइश को तो सेलिब्रेट नहीं करते. उर्स जो होता है, जिसकी सेलिब्रेशन होती है, वो उनकी मौत होती है, एंड दैट इज़ सिग्निफाइड एज द मीटिंग विद द बिलवड. सो अब सूफीज़म में एक और जो another idea which developed was the मलामतिया. एक तो ascetic सूफीज़ थे शुरू में, बाबा फरीद उसको बिलोंग करते हैं. बाबा फरीद के बाद 300 साल का अरसा गुज़रता है तो फिर शाह हुसैन हमें मिलते हैं. शाह हुसैन का टाइम है 16th सेंचुरी, अकबर का ज़माना. और अकबर के ज़माने में जब लाहौर में अकबर बीइंग द ग्रेटेस्ट मुग़ल एम्परर had shifted his capital from Delhi to Lohar for 14 years. 14 years the official capital of the subcontinent was Lohar and not Delhi. He shifted his capital and he built this Shahi Kila, was his residential palace in which he lived for 14 years. That is the time, actually, by the way, I must tell you that Lahore is now the walled city of Lahore, जिसको हम अंदरून शहर कहते हैं. It's the walled city of Lahore, which was the Lahore at the time of Akbar. And this is just, by the way, I'm telling you, it was the most evolved city of the subcontinent in those times, and the literacy rate was 100%. Lahore's literacy rate in those days was 100%, and that literacy did not mean that they could sign their name. उस वक्त के सारे आलिम फाजिल लोग थे वहाँ. हर गली गली में मस्जिद थी, गली गली में मदरसा था, जहाँ पे आलिम फाजिल लोग पढ़ाने वाले थे, दर्स देने वाले थे, और दूर दूर से सब कॉन्टिनेंट से लोग आते थे वहाँ पे इल्म हासिल करने के लिए. सो उस ज़माने में शाह हुसैन लाहौर में पैदा हुए,
और लाहौर उस ज़माने में, क्योंकि इट वाज नोन very well for the textiles, like all other things, for miniature paintings, for music. तानसेन का ज़माना था और म्यूज़िक अपने अरूज पे थी, और कपड़ा बेहतरीन जो है सब कॉन्टिनेंट में वो बुना जाता था लाहौर में. सो दैट मीन्स कि जो वीवर्स थे, जो जुलाहे थे, वो जगह जगह थे. बहुत बहुत एडवांस्ड इंडस्ट्री थी ऑफ टेक्सटाइल्स. सो शाह हुसैन के भी जो बुज़ुर्ग थे वो कपड़ा बुनने का काम करते थे. हालांकि वो ज़ात के लिहाज से राजपूत थे, मगर उन्होंने हमेशा अपने आप को जुलाहा कहा. और उनकी सारी टर्मिनोलॉजी जो है, शाह हुसैन वाज द वन हु इन्वेंटेड द फॉर्म ऑफ काफ़ी. ये जो हम काफ़ियाँ सुनते हैं आरफाना कलाम में, शाह हुसैन इन्वेंटेड द फॉर्म ऑफ काफ़ी. So he was the first poet who wrote in the form of काफ़ी. और शाह हुसैन की जितनी काफ़ियाँ हैं वो सब प्रॉपर राग और रागनियों में है, which is amazing because in those days, in the time of Akbar, all these arts were very secretly kept. और ये स्पेशली जो म्यूज़िक था वो तो घराने में, और तानसेन का ज़माना था तो वो तो सिर्फ अपने फैमिली को ही आगे ट्रांसफ़र करते थे. बट amazingly, Shah Hussain had this very deep knowledge of the rag and ragas of those days, classical ragas, and all his poetry is written according to the ragas, and it is still sung in the same ragas after so many centuries. It is still sung in the same way. So शाह हुसैन जो थे वो बिलोंग करते थे मलामतिया स्कूल को. मलामत का मतलब होता है ब्लेम. सो इफ समबडी is having मलामा, that is they invite blame on themselves. ये भी एक सूफीज़ की सूफी ऑर्डर की ये कलंदरिया ऑर्डर की सब ब्रांच है. कलंदरिया, ये कलंदरिया स्कूल है, अगेन नॉट द चिश्ती स्कूल. मगर वो मलामत को आजकल के ज़माने में अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा आसान है ये कह देना कि जी हम तो हम सूफीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते. ये नहीं होता था. वो पहले पूरा शरिया, पूरा फ़िक़ा, पूरी तफसीर पूरी पढ़ने के बाद जो मलामती होते थे. it was not that they were malamtis, that they did not that they deviated from Sharia. They did not deviate from Sharia, but they posed themselves as that. So जो शाह हुसैन है उनकी शायरी सारी जो है उसके अंदर उन्होंने सारे सिम्बल्स जो इस्तेमाल किए ना वो ये वीविंग के लिए किए हैं. चरखा इस इज़ मेन सिंबल, और फिर काटना, दाज इकट्ठा करना, वो लेके जाना. वो जगह जगह उनकी काफ़ियों में है कि अगर आपके पास अच्छा दाज जिस कुड़ी को नहीं होएगा वो इज़्ज़त नहीं होएगी. इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग गुड डीड्स फॉर योर सेल्फ. अब एक मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि शाह हुसैन की इश्क जो है ना, इश्क एज आई सेड द मेन थीम or the main idea of Sufism is ishq, which is ishq हकीकी of course. उसमें शाह हुसैन जब कहते हैं रा इश्क दा सुई दा नक्का तागा होवे ते जावे. वाह. रा इश्क दा सुई दा नक्का तागा होवे ते जावे. अब आजकल के ज़माने में तो शायद ये रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन उस ज़माने में जब वीविंग अपने अरूज पे थी तो वो सब लोग समझते थे कि धागा बनने का मतलब क्या होता है. आप लोग इमेजिन करें कि अगर जिस वक्त से आप कॉटन का फूल चुनते हैं उस वक्त से वो कितने प्रोसेसेस में से वो गुज़रता है. जब वो चरखे में आता है उसकी द स्पिनिंग ऑफ द व्हील इटसेल्फ, देयर इज सो मच टेंशन ऑन कॉटन, और फिर उसको बल पड़ते हैं, उसको खींच पड़ती है, और फिर कहीं जाके वो धागा बनता है. इफ़ यू अप्लाई इट टू योर लाइफ देन यू नो व्हाट इट मीन्स कि आपके लिए धागा उस सूरत में आना, और फिर वो धागा बनने के बाद आप इश्क के रास्ते में दाखिल होते हैं. एंड विच इज़ नॉट द अल्टीमेट. रा इश्क दा सुई दा नक्का. अब वो नक्का जो है ना वो दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट, इट इज़ द बिगिनिंग.
वो धागा बनने के बाद आप उसमें दाखिल होते हैं जहाँ से आपने शुरू करना है. So I'm sorry, but on Sufism one can keep on talking. I have to wind up. So I've come to this again. They will ask many questions. Don't I worry. know, I know. I can see on people's faces. There are many questions. So another idea which is also very important in Sufism is the collective action. Sufis don't tell you that you should leave the world and or get yourself locked in a room and ibadat kare. It's the collective action, which is actually the basis for all peace movements. If you come to think, if you apply it today, so this is what is needed, because Sufism, what is the basic message? It is this collective action. When Khwaja Ghulam Farid, for example, when he says "Aa chunur al yar," again talking in a woman's voice, says "Aa chunur al yar," ke sab milke wo kaam karenge. So it is the collective action. So the basic message of Sufism is love and tolerance, and then it is equality, compassion for oppressed, and of course the basic human rights. Yes. And that is what is needed. That is the need of today. आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हमें इसी चीज़ की है कि हमें compassion और tolerance, because that is the basis for peace. And the greatest need of the day is to have coexistence, peaceful coexistence in the world. So यही मैसेज है, और इसको जितना भी आगे आप समझें तो उनको कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में. अल्लामा इकबाल. मुझे पता है कि आप लोगों का, लेकिन क्वेश्चन को ज़रा रिलेट कीजिएगा विद. यस प्लीज. Thank you very much. Madam, I am Dr. Rashad Mahmood from Karachi. जी. I am so thankful to you for bringing softer, innocent and benign image of Islam before us. But we see some degree of malignancy in the religion. Today we see violent, militant transformation of Islam. My question is whether the malignancy I am referring to did ever exist in subcontinent throughout history? Yes, of course. अगर आप देखें, बल्कि आज I must relate to the other programs going on. KLF has been, I didn't even thank in the beginning KLF for organizing such a wonderful literature festival. लेकिन इसमें आपने देखा होगा ये बल्कि कल ही था, ये जो पंजाब के ऊपर नई किताब आई है डॉक्टर राजमोहन गांधी साहब की, उसमें देखिए आप सारी आप हिस्ट्री देखिए, ये दिस कोएग्जिस्टेंस between all the three major religions, Islam, Hinduism and Sikhism, has been there, and Punjab is the prime example for that. यही तो चीज़ में is whether this type this has been is there any precedent before of that kind of violent manifestation? Yeah, this is what I'm saying. Throughout history there has been differences of opinion, but not, of course, not like not big the scale. rulers, but within the masses there has been that. इसमें मैं आपकी इजाज़त से मैं इसमें एक तारीखी नुक्ता डॉक्टर साहब बताऊं आपको कि जब मंगोलों ने हमला किया था बगदाद के ऊपर, उसके बाद जो ये पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करके जब ये वापस गए, तो उस ज़माने में एक बंदा पैदा, इब्न तैमिया ने एक ये शुरू किया था, ये सलफ़ीज़म जो है, और जिसकी बेसिस जो है वो ये है कि एनी अदर सेक्ट और रिलीजन इज़ फॉल्स, तो वो वाजिबुल कत्ल है. तो ये जो इमेज है ये वहाँ से है. कोएग्जिस्टेंस का जो तस्वर है, आप सिर्फ इसमें देखें हमारी 47 की जो डिवीज़न जो हुई पाकिस्तान और इंडिया की, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ में जो पंजाब या सरहद या इसमें आप देखेंगे कि मारामारी इतनी नहीं हुई,
जितनी कि मारा मारी और पार्ट्स ऑफ इंडिया में हुई है, तो टॉलरेंस थी। अच्छा, मैं एक ये भी नुकता आपको बता दूं कि चूँकि आपके यहाँ काफ़ी फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट्स भी होंगे, जो तस्वर है नीत्शे का ओवरमैन का एंड ऑल्सो द बगसास ईलान, ये वो तस्वर है कि अगर इंसान अगर वाकई है मतलब इंसान को, तो उसमें इंसान कामिल जो है उसको होना है, उसको आना है। जैसे हिंदू किताबों में कल की अवतार के आने का है, या बुद्ध मत में जो है बुद्ध के आने का वो है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फिर उसको आगे चल के अल्लामा ने और मौलाना रूमी ने मर्द कामिल के कॉन्टेक्स्ट में लिया है। तो वो जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रेफ़र करता है। अब इसका इट डज़न्ट मीन कि उसके बाद कोई इंटॉलरेंस का एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि जितने भी मज़ारात हैं, शी कैन टेल यू दैट जितने भी मज़ारात हैं उसमें हिंदू ज़्यादा आते हैं, मुसलमान कम आते हैं। दादा दरबार पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो लाल शहबाज कलंदर के 4 खलीफे हैं, 4 लोग होते हैं जो मेन वहाँ पे जाते हैं। चौथा खलीफा जो है वो हिंदू है बाकायदा, बिल्कुल उनका अजमेर में बेशुमार हिंदू भी जाते हैं। ये दीज थिंग्स हम सूफ़ी थॉट ले लें या इवन भक्ति मूवमेंट ले लें, या अगर आप गुरुओं का मैसेज ले लें, actually the point is कि you have to transcend all the rituals of, if you transcend the rituals of any religion of the world, eventually it comes to इंसानियत। हर मज़हब जो है वो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, वो इंसानों के साथ प्यार करना सिखाता है, वो हमदर्दी सिखाता है, टॉलरेंस और लव सिखाता है। ये चीज़ें रही हैं दुनिया में, वो मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है, इट कम्स इन वेव्स एज़ फार एज़ आई कैन थिंक। कभी वो एक्सट्रीमिज़म ज़्यादा हो जाता है, कभी टॉलरेंस ज़्यादा हो जाती है, बट दीज थिंग्स हैव बीन देयर, अदरवाइज तो अब तक ख़त्म हो चुका होता है। एनी अदर क्वेश्चन? जी, 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। एक तो ये कि तसव्वुफ़ में कोई तफरीक नहीं है, लेकिन जो आजकल पाकिस्तान में मज़हब की तशरीह की जा रही है थ्रू तालिबानाइजेशन, उसको आप किस तरह देख रही हैं? दूसरा पार्ट ये है कि जितना वायलेंस बढ़ा है इंतहा पसंदी के थ्रू, एक्सट्रीमिज़म थ्रू, तो आप फ्यूचर क्या देख रही हैं तसव्वुफ़ का इस रीजन में, थ्रू आउट इस रीजन में? फ्यूचर तसव्वुफ़ का देखने के लिए मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं है, फ्यूचर तो अपना देखने की ज़रूरत है, और उसके लिए तसव्वुफ़ की तरफ भी जाना पड़ेगा। अच्छा, जो आपका पॉइंट है, अब ये पूरी कतार के जो है ना, अब आपको सवाल बाद में टाइम मिलेगा, मैं इनका जवाब दे दूं। देखें, जो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि पाकिस्तान की वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे अमेरिकन को जब 9/11 हुआ तो कहा गया कि भाई हमारी वैल्यूज़ पे अटैक हुआ है, आवर वे ऑफ लिविंग इज़ बीइंग टारगेटेड। पाकिस्तान का वैल्यूज़ क्या हैं कलेक्टिवली ऑल ओवर पाकिस्तान, चारों सूबों में? तसव्वुफ़ जो है ना वो हमारी वैल्यूज़ है चारों सूबों में। रहमान बाबा देखें उसमें जिसकी बम धमाका कर लिया गया, शाबलती भिटाई को देख लें, लाल शहबाज सरमस्त को देखें, रहमान बाबा को देखें, सबका वही मैसेज है। हैरान कुन बात यह है कि ये जो पीर पगाड़ा हैं, इनके जो दादा मुर्शिद हैं, इनके फैमिली के जो दादा मुर्शिद हैं, वो झंग में हैं, पंजाब में। अच्छा, फिर जो है शाहबुद्दीन जो मुल्तान में जो हैं, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, तो मुल्तान में उन दिनों अगर आप जाएं तो पूरे आपको सिंधी उधर नज़र आएंगे। और लाल शहबाज कलंदर के मेले पे जब आप जाएंगे तो आपको स्ट्रीट लैंग्वेज पंजाबी होगी, सारे पंजाबी उधर आते हैं। लोग जो अंडर लेयर के अंदर नीचे जो है वो वैल्यूज़ पे लोगों की वो है। अब ये ऊपर से कहीं से देयर इज़ सम ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, मैं एक नुकता आपको ये भी बता दूँ, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं मॉडरेटर हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि वो ये है कि सना जो है अल्लाह ताला ने दुनिया की जितने भी जो सारे सहीफ़े और किताबें जो हैं अल्लाह उनको मानता है। इवन गीता जो है, अल्लामा इकबाल ने राम के ऊपर बाकायदा इमाम हिंद कहा है उन्हें, राम को। और कृष्ण महाराज के लिए जो है वो कृष्ण महाराज का बहुत सारा वो है। तो ये जो फीलिंग आती है कि ह्यूमन इंडिविजुअल लेवल पे कि इंसान की जो है जो रिलेशनशिप किसी ख़ास मज़हब से है या दूसरे मज़हब से, तो उन जो रिलेशनशिप को की जो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, मैं एक्चुअली आई लॉस्ट माई पॉइंट।
वैसे मसूद साहब मैं थोड़ा सा जवाब दूं। अभी अभी आपने कहा ना कि ये नुक्ता ये है, सना जो है ना आज़म की जो है, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब तो बुल्ले शाह की एक लाइन में है कि एक नुक्ते विच गल मुकदी है। बुल्ले शाह कहता है कि गल समझ लई ते रौला की, राम रहीम ते मौला की। वाह वाह। So you have to transcend all the rituals. This is the main point of Sufism, that you have to transcend all the rituals and go into the philosophy, which is the same, which is the love of God, the love of human beings, and tolerance. That is the udhar se question. Communalism prevailed, the philosophy of coexistence. Say it again, sir. How the communalism prevailed, it succeeded over philosophy of coexistence taught by Sufism, and it was so strong, and millions of people slaughtered each other. जी बिल्कुल, वो तो because it shows that people are not following what the Sufi message is. अगर follow करें तो ये तो that is the answer to all the problems of today all over the world. इसमें एक किताब आई है चार्ल्स एलन की, सर मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, द गॉड्स टेररिस्ट, नई किताब आई है चार्ल्स एलन की, तो पूरा इसी पे करती है। चले सवाल ले लें दो चीज जी, एक वो खातून। Can I ask? Well, one has to find yourself, but I can recommend actually why I have given examples from the Sufi poets. As I've said, that it's very difficult to define Sufism in words, because it is not something to be explained, it is something to experience. ठीक है, and the closest way of explanation is through poetry, because poetry is and can be interpreted in many ways. हर इंसान पोइट्री जो है वो सूफियों की तो छोड़े, हम आम लोगों की भी पोइट्री, it can be interpreted in many ways. So every individual interprets poetry in according to their age, according to their experiences and according to their understanding. So अगर आप, मेरा ख्याल है कि बेस्ट तरीका ये है कि आपको जौन सी भी ज़ुबान आती है, अगर सिंधी आती है, अगर पंजाबी आती है, उर्दू में हमारे पास बहुत ज़्यादा पोइट्री नहीं है, या फिर अरबी फ़ारसी आती हो, तो आप ये सूफ़ी शायरों का कलाम पढ़ें और उसको समझें। उर्दू में अल्लामा को पढ़ें, दूसरा ये कि एक और भी चीज़ है कि विदाउट दो तरीके हैं, तसव्वुफ़ में दो तरीके हैं। आप चूँकि हम इस्लामिक मिस्टिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एक अवैसी तरीका होता है और एक शेख के ज़रिए से होता है। इन्होंने जो चार मेन बताए जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स बहुत और भी हैं, तो या तो यह है कि अवैसी तरीके डायरेक्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ले लें, फैज़ के बग़ैर तसव्वुफ़ नहीं है। अच्छा, ये कि कपड़ों में नहीं है, म्यूज़िक में नहीं है, कि अपीयरेंस के ऊपर जो है वो कोई बाबा बन के बैठा हुआ है, उस पर नहीं है। फैज़ जो है इट इज़ समथिंग एल्स। अगर फैज़ आपको मिल जाता है, इनर जर्नी, इट इज़ द स्पिरिचुअल जर्नी। Can I ask? जी प्लीज़ बच्चे बताएं। ये Okay, Sama dance is actually now like Sufism. This whirling dervishes has also become a fashion, you know. But I'll tell you the history of because Sama belongs to Maulana Room, और मौलाना रूम जो हैं, by the way, he was born like 80 years after Baba Farid. Baba Farid is almost a century earlier than मौलाना रूम. और उनके लिए ये जो वर्लिंग दरवेशेस होते हैं ना, उनकी इबादत का एक तरीका है, जैसे ज़िक्र होता है, जैसे समा होता है, इसी तरह इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। और वो लोग अभी भी कोनिया में, आई हैव बीन देयर, और वो बाकायदा वज़ू करके वो आयतें पढ़ के फिर वो ये मेडिटेशन को करते हैं। अभी आजकल आप बच्चों को तो आप जगह फिल्मों में देखते हैं या टीवी, इट इज जस्ट अनदर डांस, इट हैज बिकम अ फैशन ऑफ वर्लिंग, बट इट इज़ एक्चुअली अ वे, एक इबादत का तरीका। अच्छा, समा का कि मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ये वो होगा, क्योंकि जो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने सिंध में जो इन्फ्लुएंस उनका था 14th सेंचुरी में, तो उसमें समा का एक तरीका उनका है, लेकिन उसमें इतनी डांस नहीं है। समा का ज़्यादा जो है वो चिश्तिया सिलसिला में है, और फिर ये कि जो कलंदरिया सिलसिला है उसमें जो लाल शहबाज कलंदर की धमाल लगती है, वो भी एक समा का तरीका है।
और जो शाहद it लतीफ़ भटाई, is a state of transcending your consciousness. You see, you go into the spiritual Yes. existence. Can I? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल. देखें, उसके लिए दो तीन तरीके हैं. एक तो ये है कि जो भी कामिल मुर्शिद होते हैं, जब भी कोई उनसे ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप अपना मुरीद बनाएं, तो नॉर्मली वो उन्हें कहते हैं कि आप इस्तिखारा करें कि मैं आपके काबिल हूं. मगर हम इन चीज़ों से हम अबव होके हम फिलॉसफी की बात करें, क्योंकि इन झगड़ों में अगर आप पढ़ेंगे तो देयर इज़ नो आंसर. देयर आर सो मेनी, है ना जी. जी हाँ क्वेश्चंस करना जी. पहली बात ये है कि तसव्वुफ जो है बड़े सगीर में, खासतौर पर पाकिस्तान जो है, इसमें तकरीबन यकसा है. मिसाल के तौर पर जो है बाबा फरीद की जो शायरी है वो तकरीबन सिंधी में. बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ, जुबान फ़र्क है मगर मैसेज तो वही है. अलामतें हैं, मिसाल के तौर पर जो है वो चरखा है या नार है, वो सिंध की पोइट्री में वो वही अलामतें हैं, जो सूफियों की अलामतें हैं वो वही है. हम कहते हैं वसाल, वसाल यानी मिलाप, यानी चला गया दुनिया से, तो उसका वसाल हो गया, विसाल हो गया, क्योंकि वो मिला जाके. It is the reunion. It is the union with the God. मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो ये रवादारी है, या जिसको हम सूफिज्म कहते हैं, क्या ये सेक्युलरिज्म के मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है? सेक्युलरिज्म यानी लकुम दीन को वली दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, मेरा मजहब मेरे साथ. हमारा एक जो है एक सूफी था, ये रूहल फकीर, एक हिंदू, वो उसका मुरीद था. मैं एक थोड़ी सी बात बता रहा हूँ. तो उसका जो बेटा था, वो उसका नाम है हरी दिलगीर, उस बहुत बड़ा शायर है सिंधी का. तो उसने कहा कि मुर्शिद से जाके पूछा कि मेरा बेटा क्या बने. उसने कहा तुम्हारा बेटा इंजीनियर बने. आया बेटे को कहा, उसने कहा कि मेरे इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ी. उसने कहा जो जवाब देना है मुर्शिद को जाके जवाब देना, मुझे जवाब नहीं दो. बेटे को लेकर गया, उसने कहा मुझे तो मुर्शिद के सामने में बोल ही नहीं सका, इसी वजह से मैं इंजीनियर बन गया. यानी इतने किस्म का, यानी वो हिंदू, वो मुसलमान, यानी वो रूहल फकीर, इस किस्म का हमारे यहाँ है. मजहब का कोई दखल ही नहीं है, यानी एक दिल का दिल से ताल्लुक है. तो मेरा सवाल यही है कि ये जो है वो यही तो मेन तो नुक्ता ये है सूफीज़म का, इश्क. वो दिल से ताल्लुक होता है. This is a fascinating session. My name is Masood. I'm a journalist visiting from London. Thank you to you both so much. So I just want to change direction a little bit and ask you, to what extent do you think globally that Sufism and all the things that you've been talking about has become institutionalized, and particularly here, is part of the feudal society? What are the links between feudalism and Sufism? No, Sufis have always been against feudalism and against authoritarianism. That's what the message of the Sufis has been. No Sufi has ever accepted the rulers as such. And that is why they talk of equality. And equality is actually जो खानकाही, what happened at those khankas, they started decaying in the early period of 20th century because people started using their following and their khankas for political purposes. But still, despite all these things, the phase and the actual part continued. Ji, please. My question. बिल्कुल, that is the message. नहीं चल सकते. साथ साथ तो I just have a request. If everybody can keep their questions precise. Last one. मेरी तरफ से सिर्फ एक पॉइंट है जो सवाल नहीं है, मैं ऐड करना चाहता हूँ. वो यही है कि मैम ने जैसे शुरू में ही बात कही कि सूफीज़म में कोई मिस्टिसिज्म और इस्लामिक मिस्टिसिज्म और सूफीज़म, जैसे सर ने कहा कि सूफीज़म में सच कोई तफरीक नहीं है. और यहाँ सब कॉन्टिनेंट के सूफीज़म को अगर देखा जाए या इवन वर्ल्ड सूफीज़म को देखा जाए
तो सूफीज़म की बुनियाद जो उठी है, जो उसने आगे प्रोपगेट किया है, वो बुनियादी तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी, रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म के ख़िलाफ़ था। राबिया बसरी से लेकर मंसूर हल्लाज से लेकर शाह इनायत शहीद से लेकर मखदूम बिलावल तक, सच्चल सरमस तक, किसी एक भी बंदे का नाम आप बुल्ले शाह से लेकर बाबा फरीद तक, सबके ख़िलाफ़ अगर कोई गया है और उनको अगर उनको इंसल्ट किया गया है, या इब्न रुश्द की मिसाल ले लें जो इतना बड़ा फ़कीह था, अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम था, उसको भी जलील किया गया, तो उन्हीं मजहबी इदारों ने जलील किया। जैसे बाहू कहते हैं, मैं तो यही समझता हूँ कि सूफीज़म का यही पैगाम है, ना रब अर्श मुअल्ला होते, ना रब खाने काबे हूँ, ना रब विच मसीती मिलिया, ना रब विच महराबे हूँ, गंगा तीर्थ मूल न मिलिया, पैंडे बे हिसाबे हूँ, जगदा मुर्शिद मिलिया बाहू, छुट्टे सब अजाबे हूँ। सबका यही मैसेज है, हर सूफी का ये। रोमी की बात कही थी इन्होंने, तो मैं रोमी की एक आखिरी बात कहूँगा, सिर्फ आखिरी बात रोमी की, कि रोमी ने जो सूफीज़म की बात कही है, उस सूफीज़म का एक दो लाइनें हैं वो मैं कह देता हूँ। कि रोमी की जो बात है वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारे इंसान देखे हैं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं होता। इंसानियत की बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे इंसान देखे हैं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं होता, मगर मैंने बहुत सारे लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। Thank you. I just wanted to pick up the question that was asked at the front Yes. about the connection between feudalism and the conception of Sufism in Pakistan. It's true that Sufism was above feudalism, but in fact all of the Sufi shrines have got descendants and are all generating a kind of feudal culture around them. They've bred a feudal culture around them which has impoverished people who are living in those territories. And there's a real question of rural poverty and very wealthy feudal families who claim to be inheritors of that Sufi tradition. In a way, I wouldn't say that. नहीं, but the Sufis are against that control, यही तो सारी बात है। और अभी जैसे मुर्शद की बात हो रही थी कि जी आपको मुर्शद की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी आजकल के ज़माने में it has become difficult. I will agree to that कि आपको अच्छा मुर्शद कैसे मिलेगा। जैसे मुर्शद का कामिल होना भी तो ज़रूरी है। जैसे बुल्ले शाह ने कहा है, मैं पा पढ़िया तो डरना हाँ, पा इज़ 1/4, तो बुल्ले शाह कहते हैं मैं पा पढ़िया तो डरना हाँ। जो रिलीजन के वो ठेकेदार हैं मुल्ला, वो उनको तो बुल्ले शाह ने डायरेक्टली एड्रेस किया ना। वो कहता है कि कुरान किताबां चार चुफेर, गिरदे चानन विच हनेर, कि अगर आपने वो समझाई ना, यू आर सराउंडेड बाय ऑल दीज रिलीजियस बुक्स, बट गिरदे चानन विच हनेर, तो वो इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग। एंड उसके लिए मेरा तो ख्याल है कि आपको को बहुत ज़्यादा, अनलेस यू आर लकी इनफ टू फाइंड अ वेरी, आप अपने मेडिटेशन के थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ समझ तो आ ही जाती है। आपको बताऊं कि यस, वो तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ, ये इधर से Actually, that was precisely the reason that because of this decaying of this khanqah and established Sufi जो दरगाहें थीं, उनकी डिके की वजह से ही रास्ता मिल गया दूसरे तरह के मज़हबों को। और अब देखें जितने भी जैसे दीन मुल्ला, अल्लामा इकबाल का है कि दीन मोमिन ज़ोहद तकवा जिहाद, दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फसाद। और इसी तरह आप जितने भी हमारे सूफ़ी शोरा हैं पंजाब के या सिंध के, सब ने मुल्लाओं के ऊपर जो है वो तनकीद की है। और दूसरा ये कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना, this concept of Sufism has been exploited by the rulers and the feudal. हाँ जी, उसको exploit करना आसान। हाँ जी। This is yes. the last Okay. question. Huh? My question. Isn't that Sufism is all about come out of the boxes of religion? Like Sachal said that Mazhaban Mulk mein Manu Mujaya, like religion has made people fight with each other. Then there's another. Sachal Sarwat has said that. Say it again. I'll translate. Mazhaban Mulk mein Manu Mujaya. Then Bulle Shah said that
बुजुर्गी बेद बुलाया आदो की नया कुलवारा इसके मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा एक बंदे दा दिल ने ढामी रब दिल वाह। जानता है। And there's Wow. that Bulle Shah said that ke like असां तेरे पीछे दीन ते ईमान छड़िया मंदिर ते मस्जिदां दो जहान छड़िया. That does mean leave the temple, leave the mosque and go for the spirituality, go for the finding, and this is the all about the Sufism. But I want to ask that is Sufism all about secularism and finding God? Then why isn't in a religion like Islam? So it should be separate from that. Religion, that is exactly what the religion says, that you don't have to be the slave of rituals. Religion teaches you to transcend the rituals. The rituals Sir, are you there. made your point, please. Rituals are there for your आपकी वो उसके क्या कहना चाहिए कि आप हाँ डिसिप्लिन करने के लिए आपको. And as I've told you कि no Sufi whatever they said afterwards, उनके पहले शरिया को पूरा देखें. दो चीज़ें जो हैं तरीक़त और शरिया, ठीक है, इसका एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है. These are not against each other, you know. You have to have knowledge of sharia first and then you transcend and go into तरीक़ा. But then, ये नहीं कर सकते आप सीधे डायरेक्टली तरीक़त में चले जाओ और आप शरिया का आपको पता ही ना हो. ये when you do that, even सच्चन या शाद लतीफ़ भिटाई या जितने भी हैं, and when you go through the proper channel, you know, if you have the knowledge of religion and then you go into tariqa, then you know exactly what you are doing. ठीक है ना. And then you have the knowledge of the basics. ये गलत है कि हम सीधे तरीक़त पे पहुंच जाएं और शरिया को छोड़ दें. ये नहीं कर सकते. अच्छा नहीं बस नहीं you made your point, please. Hindu, हमें wind up करना है. a Hindu or a Sikh or a person following any other religion who would not naturally have no knowledge of the Sharia, for me, the definition of Sufism, though I admire it, is a bit paradoxical in the sense that we do talk about love, which is an all-encompassing emotion. Yes. But then we define it as Islamic mysticism. So how do we make that distinction clear? I didn't say that it's mysticism is only in Islam. That is how I started, that mysticism is in every religion of the world. You have to transcend the rituals, I'm saying it again and again, of all religions, and then you get to the same philosophy. The philosophy of truth is there, and that is universal. सिर्फ मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूँगा जी मसूद साहब से और मैडम से कि ये जो बरसगीर है इनके जो औलिया सूफ़ी उन्होंने जो मैसेज दिया, जो वार अगेंस्ट टेररिज्म का आजकल नारा चल रहा है, तो यहाँ पे एक औरंगज़ेब ने इस दीन मुतारफ़ कराया, एक दारा और सरमद ने कराया, तो उस पर थोड़ा सा करें कि उनके इम्पेक्ट क्या हैं आज तक. आप करेंगे. आप बताएं. देखें ये किताब जो इनकी है ना जो अपने गांधी साहब की जो किताब है वो हाँ let's find out. The time is out. So thank you very much indeed, and I hope you got enlightened, and thank you very much Sarwat for wonderful talk. Thank you.